Hello everyone. So basically in this video lecture, we will study about biosignaling in bacteria and plants. So till now we have studied signaling in like animals. The animals में जो different type of signalings है, चाहे वो हमने आपका GPCR होते हैं, RTKs होते हैं, we have receptor guanylyl cyclase, we have your voltage gated ion channels, we have your addition receptors and basically your nuclear receptors. So in this video, basically we'll study about कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, और प्लांट्स, इनके अंदर भी जो सिग्नलिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो प्लांट्स में विल टेक एग्जांपल ऑफ इथाइलिन, बिकॉज जितने भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, आइदर दे आर बेसिकली ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, बेसिकली और एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, सो ऑल of them show signaling, but in this we just study about signaling, that is ethylene signaling. So basically signaling in microorganisms and plant, ठीक है. So अभी तक generally जो हमने जो signaling को हम relate करते हैं, वो related with mammalian tissues or cultured cells, but bacteria, archaebacteria, ठीक है, eukaryotic microorganisms and your vascular plants, they must also respond to variety of signals, either that is oxygen, nutrients, light, noxious chemicals and so on, ठीक है. तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैमल्स में ही सिग्नलिंग होती है, जो आपके लोअर प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, उन सब के अंदर भी सिग्नलिंग होती है, ठीक है. सो ओवर हियर वी विल कंसीडर सिग्नलिंग इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स. So this particular bacterial signaling, which entails phosphorylation in two component system, ठीक है. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली क्या होता है आपका two component system, ठीक है. So we have two component system, ठीक है. So basically जो आपका E. coli है, that responds to nutrients in its environment, ठीक है, कि जो भी बैक्टीरिया होता है, it responds to nutrients in its environment, including sugars, including your amino acids, and by swimming toward them, propelled by one or a few flagella, क्योंकि flagella ही basically होता है which is responsible for motility. So basically if there is sugar or amino acid in the vicinity of bacteria, so it will move towards that particular sugar or amino acid with the help of a flagella. So we have a number of membrane proteins, or basically those proteins have a binding domain on the outside of the cell membrane to which specific attractants bind. So we will try to understand with the help of an image. So this is basically the two component signaling mechanism in bacterial chemotaxis. Chemotaxis का मतलब ये होता है कि movement of bacteria towards chemical. So as you can see, there are two components. One is receptor histidine kinase, that is your component one, and the second is response regulator, ठीक है. तो यहाँ पर हम दो components की बात कर रहे हैं. एक component का नाम है receptor histidine kinase and the name of the second receptor is response regulator, ठीक है. So when an attractant ligand, जैसे आपका ligand है, when it binds to the receptor domain of the receptor, a protein histidine kinase in the cytosolic domain, ठीक है, जैसे ये extracellular है और basically that is binding domain and this is your cytosolic domain, is activated. और सबसे पहले क्या करता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑन ए हिस्टिडीन रेजिड्यू, ठीक है. दिस फॉस्फोराइल ग्रुप इज देन ट्रांसफर टू एस्पार्टिक रेजिड्यू ऑन कंपोनेंट 2. तो पहले इसने अपनी फॉस्फोराइलेशन कराई एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड टू द कंपोनेंट 2, ठीक है, जो आप देख रहे हो जिसमें एस्पार्टिक एसिड होता है, ठीक है. आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑन एस्पार्टिक एसिड, कंपोनेंट 2 मूव्स टू द बेस ऑफ फ्लैजेलम, ठीक है. तो ये कंपोनेंट जो 2 है, ये फ्लैजेलम के बेस की तरफ चला गया
and this will determine the direction of rotation of flagellar motor. ठीक है, तो component 2 ये control करेगा कि जो basically flagella जो होता है उसमें एक motor होती है, तो उसमें motor की movement के accordingly आपका बैक्टीरिया जो है वो move करता है. ठीक है. So the main point is over here is that कि बैक्टीरिया के अंदर we have receptor histidine kinase. ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने सिग्नलिंग पढ़ी है that was receptor tyrosine kinases, और ये आप चाहे यहाँ पे you can note it down also कि जो receptor tyrosine kinases होते हैं they are not found in bacteria. Receptor tyrosine kinases are not found in bacteria. So बैक्टीरिया में हमारे पास क्या होता है, receptor histidine kinase. Receptor tyrosine kinases are not found in bacteria. Okay, so first component is receptor histidine kinase and component 2 is your response regulator, जिसमें basically आपकी aspartic acid की phosphorylation होती है, and because of that phosphorylation जो आपका basically जो motor है, ठीक है, उसकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली आपने इसमें ध्यान रखना है. द टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम और सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन बैक्टीरियल chemotaxis. So this is how signaling takes place in bacteria. So they can ask something like that. तो इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट आप बस ये याद रखना कि बैक्टीरिया in bacterial signaling receptor histidine kinase is involved, not your tyrosine kinase. So यहाँ पर we have mentioned the same thing in theory also. So but basically the ligand binding. So the ligand binding basically causes another domain on the inside of cell membrane to autophosphorylate a histidine residue. ठीक है, यहाँ पर हमने histidine की बात की है. That is the first component of the two component system, the receptor histidine kinase, then catalyze the transfer of phosphoryl group from the histidine residue to an aspartic residue on a second soluble protein. ठीक है, तो पहले histidine के ऊपर phosphate लगा, उसके बाद वो aspartic acid पे चला गया, which is the response regulator. This phosphorylation moves to the base of flagellum, carrying the signal from the membrane receptor. ठीक है, तो जो signal आया है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो मोटर की मूवमेंट से जो बैक्टीरिया है that will move towards the your sugar or amino acid. ठीक है, जो भी शुगर या अमीनो एसिड जो उसको रिक्वायर्ड है, तो वो उसकी तरफ आपका मूव करेगा. So in the next point we have E. coli detects not only sugars and amino acids but also oxygen. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया सिग्नलिंग में सिर्फ sugars या amino acids. They have signaling mechanism to like detect oxygen, extremes of temperature and other environmental factors also using this basic two component system. ठीक है, तो ये जो basic two component system है, this is not only meant for detection of sugar and amino acids but also availability of oxygen, extreme of temperature and other environmental factor, maybe salt concentration, pressure, etc. So these systems have been detected in many other bacteria, both gram positive, negative and in archaea as well as in protist and fungus. ठीक है, क्योंकि जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया आया, यू बैक्टीरिया आया, आफ्टर दैट आपके प्रोटिस्ट आए, फंगस आया. सो बेसिकली दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल द लोअर यूकैरियोट्स as well as in your bacteria. So this signaling mechanism developed early in the course of cellular evolution and has been observed. तो ये जो सिस्टम था, तो जब बेसिकली इवोल्यूशन चल रहा था, तो दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन early evolution. So this is basically the signaling bacteria. You just need to remember two component system. Component 1 is basically your histidine kinase and component 2 is basically your aspartic acid. मतलब जिसमें aspartic acid की क्या होती है, phosphorylation. So next pathway we have, that is basically, as I already told you, there are different type of signalings in plants.
but over here we will just discuss one signaling, that is how plant detect ethylene. Ethylene, which is your gaseous hormone and which is responsible for ripening of fruits. So it also basically act through your MAPK cascade. ठीक है, तो MAPK cascade जनरली हमने आपका जो इंसुलिन वाली सिग्नलिंग थी, ठीक है, सो द बेसिक सिग्नलिंग वी हैव स्टडीड, सो दैट वाज योर इंसुलिन सिग्नलिंग। तो वहां पर हमने MAPK कैस्केड आपका पढ़ा था, माइटोजन एक्टिवेटेड or mitogen activator protein kinase. So it also acts through the same type of signaling. So as we know, ethylene is basically a gaseous hormone and which stimulates the ripening of fruit. And this particular amino acid, this particular plant growth regulator is derived from an amino acid. जो आपका ethylene होता है, ये methionine से बनता है. It is made from an amino acid which is your methionine. ठीक है, so it acts through receptors that are related in primary sequence to the receptor histidine kinase of bacterial two component system. ठीक है, तो जब इसको हमने primary sequencing करा, primary sequence basically we have seen the what is the sequence of amino acid. So basically हमने क्या observe करा कि इसका जो sequence है that basically matches with the basically your bacterial two component systems and probably evolved from them. ठीक है, so basically in Arabidopsis, अभी ये plant का नाम ले रहा है Arabidopsis, so this system is present or basically contained within a single integral membrane protein of ER. ठीक है, तो ये जो basically हम system की बात कर रहे हैं, ये कहाँ present होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, not in basically your cell membrane. ठीक है, so this particular two component system is present in basically endoplasmic reticulum. So ethylene, as we know, it diffuses into the cell through the cell membrane and into the ER. Obviously ethylene जो है वो gaseous है, it can simply diffuse through the cell membrane और फिर ये ER में आपका enter हो जाता है. So basically इसको भी हम पहले diagram से देखते हैं कि इस signaling में होता क्या है. So this you can see. So this is basically the ethylene receptor. This is a two component system. First component which is responsible for binding, and second which is basically which is present inside the cell. So the ethylene receptor is a two component within a single protein which has a receptor domain. जैसे वहां पर आपका component 1 था and the regulator domain. वहां पर जो regulator था वो soluble था, but यहाँ पर जो regulator है that is both receptor and regulator, they are part of single protein. The receptor controls the activity of CTR1, which is a protein kinase similar to MAP-KK. ठीक है, अगर आपको वहां पे याद हो तो जो हमारा RAF1 था, बेसिकली इंसुलिन सिग्नलिंग में हमने बात की थी RAF1, MEK and ERK. So वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सबसे फर्स्ट वाला होता है दैट इज MAP-KK. ठीक है, MEK was MAP-KK and ERK was basically MAPK. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो CTR1 है, जैसे अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये किसके सिमिलर होता है, MAP-KK. मतलब you can it is a protein kinase similar to RAF1, you can say. So basically over here CTR1 is a negative regulator of ethylene response. मतलब CTR1 जब एक्टिव होता है तो MAPK कैस्केड आपका नहीं होता है. ठीक है, when because over here it is written CTR1 is a negative regulator. CTR1 कैसा रेगुलेटर है, नेगेटिव रेगुलेटर. तो CTR1 जब आपका एक्टिव है तब MAPK कैस्केड नहीं होगा. When CTR1 is active, then there will be no MAPK cascade. But जैसे ही आपका इथाइलिन आगे लगता है, so in ethylene signaling, basically binding of ethylene to receptor that will leads to
बेसिकली इनएक्टिविटी ऑफ CTR1 कि CTR1 आपका इनएक्टिव हो जाता है और फिर उसके बाद MAPK कैस्केड स्टार्ट होता है एंड आफ्टर दैट it basically passes the signal to EIN2, EIN3 and basically at last ERF1 which is a transcription factor. ठीक है, तो ये भी वैसी सिग्नलिंग होती है बट इसमें CTR1 जो है when it is active, so basically it is not allowing the basically transcription of genes, but the binding of ethylene to receptor leads to basically inactivation of CTR1 और CTR1 जब आपका inactive होगा then there will be this MAPK cascade and these are the proteins they have shown EIN2, EIN3 and at the end ERF1 which is the transcription factor and it binds to DNA and that will lead to transcription of your RNA. ठीक है, तो इथाइलिन रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, तो मेनली आपने इसमें यही ध्यान रखना है. सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली द फर्स्ट डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट इफेक्टेड बाय इथाइलिन सिग्नलिंग इज ए प्रोटीन एंड व्हिच इज योर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज. ठीक है, ये जो CTR1 होता है इसको बेसिकली हमने क्या बोला है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज. एंड सीक्वेंस होमोलॉगी टू राफ. ठीक है, राफ हमने पहले पढ़ा था कि जो राफ होता है सो द प्रोटीन काइनेज दैट बिगिंस द MAPK कैस्केड. ठीक है ना, वहां पर हमने पढ़ा था रास था, फिर राफ1, MEK, ERK. ठीक है, तो CTR1 has an homology with the RAF. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने सिग्नलिंग देखी. ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रखा है इन द एब्सेंस ऑफ इथाइलिन CTR1 kinase is active. ठीक है, and inhibits the MAPK cascade, so there will be no transcription of the ethylene responsive genes. Exposure to ethylene inactivates the CTR1 kinase and basically this MAPK cascade will be going to get activated and at the end there will be activation of transcription factor EIN3. EIN3 फिर stimulate कराता है synthesis of ERF1 which in turn activates transcription of ethylene responsive gene. The gene products affect processes ranging from seedling development to fruit ripening. ठीक है, क्योंकि जो भी इथाइलिन तो जस्ट एक सिग्नल शेयर कर रहा है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट बेसिकली जैसे इथाइलिन की सिग्नलिंग होती है उसके बाद बेसिकली आपका इट विल जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी जीन्स की दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सीडलिंग डेवलपमेंट टू फ्रूट राइपनिंग. Although apparently derived from bacterial to component signaling system. ठीक है, इथाइलिन जो सिस्टम है in Arabidopsis is different in that of histidine kinase activity that defines component 1 in bacteria is not essential to signal transduction in Arabidopsis. ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं डिफरेंट होता है क्योंकि वहां पर आप देख रहे थे कि पहले ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसके बाद जो आपका कंपोनेंट 2 होता है, बट इसमें आप देख रहे हो कि जो कंपोनेंट 1 और जो 2 हैं वो बेसिकली एक ही उसमें एक तो दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द सेम प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन but it do have 2 components. One component is basically that is basically which is to which basically your ethylene binds and the second component is basically responsible for inactivation of CTR1 क्योंकि CTR1 जब inactive होगा तभी आपका जो आगे सिग्नल जाएगा और इथाइलिन वाला आपका रिस्पॉन्स आएगा.